हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस लेक्चर में हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा डबल फर्टिलाइजेशन में वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। यस, एक मेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा था एग सेल के साथ और डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हो रहा था। यही जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। So here the process of development of zygote into an embryo is called as embryogenesis. So embryogenesis में ये zygote जो सिंगैमी में फॉर्म हुआ था ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में. So that is embryogenesis. The embryo is developed at the micropylar end of embryo sac. So embryo sac के micropylar end की तरफ डेवलप होता है एंड द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। जब कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है तभी एम्ब्रियो का ग्रोथ शुरू होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म से ही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। इसलिए जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म होगा देन ओनली एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगन्स। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सो हियर यू कैन सी एम्ब्रियो इज डेवलप्ड इन द एम्ब्रियो सैक एट द माइक्रोपाइलर एंड। यस, सो एम्ब्रियो डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एज सुन एज पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट। सो जैसे ही एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट फॉर्म हो जाता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ हियर जाइगोट डिवाइड्स इनटू टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड होता है टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो में। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो। द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल is called as basal और suspensor cell। ये zygote डिवाइड हो रहा है टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो में, दिस इज प्रोएम्ब्रियो। और यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है। दिस इज द लार्जर सेल एंड दिस इज द स्मॉलर सेल। सो लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल दैट इज कॉल्ड एज basal और suspensor initial cell, whereas smaller cell towards the chalaza। chalaza की तरफ ये स्मॉलर सेल फॉर्म होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। इसे हम टर्मिनल या एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल कहते हैं। अब ये सस्पेंसर सेल डिवाइड होगा ट्रांसवर्सली इन वन प्लेन टू फॉर्म फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल्स। ये सस्पेंसर सेल जो ऊपर का लार्जर वन है ये डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है इसमें एक ही प्लेन में और प्रोड्यूस करता है 6 to 10 filamentous suspensor cell। Here you can see in the diagram suspensor cell डिवाइड हो रहा है 6 to 10 filamentous cell में। The first cell of the suspensor towards the micropyle end becomes swollen and function as hostorium। micropyle end की तरफ सस्पेंसर का जो पहला सेल है वो swollen होता है एंड hostorium की तरफ फंक्शन करता है। द लोएस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज़ नोन एज हाइपोफाइसिस। सस्पेंसर का जो लास्ट वाला सेल है इसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। सो सस्पेंसर का काम क्या है? हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो टू इन द एंडोस्पर्म। तो सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है। The hypophysis by further division give rise to the part of radicle and root cap। सस्पेंसर इनिशियल का लोअर मोस्ट सेल हाइपोफाइसिस में फर्दर डिवीजन होगा एंड पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप फॉर्म हो जाएंगे। सब्सिक्वेंटली द सेल्स ऑफ द अपर टियर ऑफ द ऑक्टेंट डिवाइड इन सेवरल प्लेन सो एज टू बिकम हार्ट शेप। तो सब्सिक्वेंटली अपर टियर के जो सेल्स हैं ऑक्टेंट के अपर टियर के सेल्स इनमें डिवीजन होगा, डिवाइड होगा सेवरल प्लेन्स पे एंड हार्ट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा विच देन फॉर्म टू लेटरल कॉटिलिडन। फिर उनमें टू लेटरल कॉटिलिडन्स फॉर्म होंगे एंड देन टर्मिनल प्लूम्यूल। ना सब्सिक्वेंटली द सेल्स ऑफ द अपर टियर
of this octant divide into several planes में इनका division होगा so as to become heart shaped structure form हो जाएगा which then form two lateral cotyledons में two lateral cotyledons form होंगे and a terminal plumule will form. So further enlargement of the hypocotyl and cotyledon results in curvature of embryo and it appears horseshoe shape. So पहले heart shape में form होता है and then इसमें lateral cotyledons form होंगे two cotyledons and then it appear as horseshoe shape. Here we can see development of dicot embryo in capsula. So in the first diagram you can see here A. This is oospore. When zygote develop, so zygote develop into oospore first and then it develop into two-celled proembryo. So first A is oospore and then it develop into two-celled. This B diagram you can see this is proembryo where E indicates embryonal initial and T indicates suspensor initial. Here M indicates embryo sac membrane. Yes, B1 is four-celled eye-shaped proembryo. This B1. In the B1, E1 and E2 are from embryonal initial. Here E1 and E2. They are embryonal initial whereas S1 and S2 are from suspensor initial. So E1 E2 embryonal initial है, S1 S2 suspensor initial है. Then you can see C diagram. C is what? Further development of embryo. Embryo का जो further development होगा पहला oospore and then proembryo then further development takes place. S indicates this suspensor, H is hypophysis and E is embryonal mass. Then further development D stage. This is the LS of ovule. In this part is endosperm in free nuclear stage. Whereas this is antipodal tissue. Now embryo, this is what? Developing embryo. You can see here this is developing embryo. Now let's move on E diagram. Here embryo showing further development of embryonic octant and hypophysis. Now next is F. F here you can see this is the diagram of LS of ovule. Here endosperm becomes cellular. You can see endosperm becomes cellular. This is embryo and this is antipodal tissues. Now let's move on G diagram. So this is what? The embryo where this COT indicates cotyledons, this is hypocotyl, this is radicle, RC is root cap and this is suspensor initial. Now let's move on H diagram. This is what? The diagram of mature seed. This part is plumule and this is what? The cotyledons. So endosperm has been consumed almost completely in this diagram. So this is what about the development of dicot embryo. The embryo development is similar in both dicots and monocots up to the octant stage. So octant stage तक embryo का development dicot and monocot में बिल्कुल similar होता है. It is same in dicot and monocot. And the difference appear later. Octant stage के बाद ही उनमें difference दिखाई देता है. In monocot embryo, single cotyledon occupies terminal position and plumule is lateral. Monocot embryo में single cotyledon terminal position पे होता है and plumule lateral position पर होता है. So this is the development of monocot embryo. Already we had discussed. Like firstly zygote is formed and zygote form a wall around it and is converted into oospore. And then this oospore divides transversely to form large basal cell towards the micropyle and small apical cell towards the interior of the embryo cell. And from this two cell until the formation of the organs, the embryo is commonly called proembryo. Here proembryo is formed.
and then the basal cell divides transversely to form a row of cell that is called as suspensor, and the suspensor pushes the embryo deep in the endosperm for its proper nutrition. Yes, the apical cell of the two celled proembryo that undergo a transverse and two vertical divisions. में transverse and two vertical division होगा right angle पे to each other to form an octant stage. Yes, and then यहाँ पर जो 8 celled होगा, 8 cell of the octant proembryo, that उसमें many division will takes place and then it forms a spherical mass of cell. ऐसा mass of cell यहाँ पर form होगा and gradually this mass becomes heart shape and then horseshoe shape में convert हो जाएगा. Yes, finally it gets differentiated to form embryonal axis with plumule, radicle and two cotyledons in dicot and a single cotyledon in monocot. The single shield shape cotyledon is called as scutellum. Single shield shape means single cotyledon, इसे हम कहते हैं scutellum. The protective sheath of plumule is called as coleoptile. Plumule की जो protective sheath है उसे coleoptile कहते हैं and radicle की जो protective sheath है उसे coleorhiza कहते हैं. So finally ovule is transformed into seed and ovary into fruit. Finally ovule से seed बन जाता है and ovary से fruit बन जाता है. So this is what about the development of embryo, and now in next lecture we will discuss about seed and fruit development.